ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। फ्रॉम रिजल्ट्स, दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ आवर फेगन एट अल स्टडी। सो रिजल्ट्स क्या कहते हैं? सो इट इज़ फाउंड दैट 4 juvenile elephants successfully learned the trunk wash. However, the adult elephant did not. हमें याद है that we had total of 5 participants in this study. एक हमारे पास adult elephant थी जो कि 50 years की थी, and along with that हमारे पास जो है वो 4 और juvenile, जो कि juvenile का मतलब होता है बच्चे elephants थे. Again females थी वो भी, and they were almost 4 to 7 years old. So हमारे पास रिजल्ट्स में ये पता चलता है कि जो हमारे जुवेनाइल एलिफेंट्स थे दे बेसिकली लर्नड द ट्रंक वॉश बिहेवियर. हाउएवर हमारा जो एलिफेंट था, जो बड़ा एलिफेंट था, एडल्ट एलिफेंट, दे डिड नॉट लर्न द ट्रंक वॉश बिहेवियर. एलिफेंट्स नंबर 2 and 4 never passed their steady test. सो अगेन हमारे पास जो एलिफेंट्स नंबर 2 and 4 थे, दैट मीन्स हमारे पास हमने हर एलिफेंट को, हर पार्टिसिपेंट को नंबर अटैच किया हुआ था 1 2 3 4 5. सही है. 5 जो है वो हमारी वो थी क्या बोलते हैं, वी हैड 1 एडल्ट एंड 4 जुवेनाइल. सो यहाँ पे जो 2 की बात हो रही है, एलिफेंट नंबर 2 एंड एलिफेंट नंबर 4 नेवर पास्ड देयर स्टडी टेस्ट. दैट मीन्स कि हमने एक कहा था ना कि वी हैव टू आफ्टर ब्लोइंग के बाद वी हैड टू द एलिफेंट हैड टू स्ट्रेच आउट देयर ट्रंक and keep it there for a few seconds, which will indicate that the behavior has finished. So हमारा नंबर 2 एंड नंबर 4 जो एलिफेंट था उन्होंने स्टडी टेस्ट पास नहीं किया. स्टडी टेस्ट पास ना करने का मतलब ये है कि दे नेवर learned the behavior of holding their trunk steadily but were able to pass the full trunk test. Why? Because we remember हम लोगों ने कल बात की थी इसके बारे में that 80% if our behavior was carried out properly, we will say that they can pass the test. We will consider it as an accurate behavior. So again हमने अगर सिर्फ trunk steady नहीं कर पाए हमारे ये 2 elephants, तो it was okay, it was perfectly fine and we let them go. Elephants 5 did not pass her blow into the bucket designation to syringe or steady test. There are a number of factors which may have influenced the behavior. Now, who's the elephant number 5? Elephant number 5 is basically the adult elephant. इसका रीजंस क्या है? उसने बहुत सारे टेस्ट पास नहीं करे. उसने ब्लो इन द बकेट, शी डिड नॉट, शी वाज अनएबल टू लर्न, शी वाज अनएबल टू लर्न desensitization from the syringe. She was getting scared of the syringe, and there were multiple factors from that for that as well. Now सबसे पहला फैक्टर जो हम लोगों को लगता है that could be that this elephant was old and likely had both her visual impairment and trunk weakness. So again, why could it be कि हमारा जो adult elephant था वो नहीं सीख पाया? उसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा reasons दे दिए हैं. reasons क्या है कि हमारी जो old elephant था, adult elephant था, she was 50 years old, and that is the reason because of which she also had visual impairment. दैट मीन्स उसको कम दिखता था. और दूसरा उसकी ट्रंक जो है वो वीकनेस थी. ट्रंक वीकनेस क्या होता है कि दैट मीन्स वो अपनी ट्रंक के साथ ज़्यादा जो है ना क्या बोलते हैं, ट्रंक को उठाकर या ट्रंक से बहुत सारे काम नहीं कर पाती थी. सो दैट मीन्स कि हम लोगों ने मेजॉरिटी ट्रंक से ही सारे बिहेवियर्स करवाए थे, विच कुड बी द रीज़न कि हमारी ये वाली एलिफेंट जो है, जो 50 years old वाली एडल्ट एलिफेंट, वॉज अनएबल टू लर्न दिस. Also, there was a calf on the adjacent stall that interrupted most of some of her sessions by entering the training area. So हमारी जब इस elephant की वो चल रही थी ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग के दरमियान there was an elephant calf, छोटा सा बच्चा ऑफ एलिफेंट, दैट केप्ट एंटरिंग द ट्रेनिंग सेशन, एंड बहुत सारे सेशंस में वो इस तरह से इंटरप्ट होती रही. एंड दैट कुड ऑल्सो बी द रीज़न कि उसने सही से हमारा बिहेवियर जो है वो ट्रेन, या उसकी ट्रेनिंग के अंदर इतना प्रॉब्लम आ रहा था, ये काफ बार बार उसके स्टॉल में आ रहा था और इंटरप्ट कर रहा था. दिस कुड ऑल्सो बी द रीज़न बिकॉज ऑफ विच आवर एलिफेंट्स could not learn the behavior properly. Trunk wash learning. The 4 juvenile elephants successfully learned the trunk wash in the study's time frame.
The adult elephant, elephant number 5, did not grasp the necessary components for trunk wash. Specific achievements include elephants 2 passing after 25 sessions. और आगे हम लोगों ने सेशंस 25 सेशंस की जो है वो मिनट्स जो है वो पर मिनट्स जो है वो हम लोगों ने लिख दिया है per session. Elephant number 1 after 30 sessions and elephants number 3 and 4 after 35 sessions. ठीक है, so हम लोगों ने यहाँ पे इसके आगे we've also written down the minutes that they took in a session and इतने मिनट्स में वो पास हुए थे एक सेशन में. सही है. Elephant number 5 was never tested. Why was elephant number 5 never tested? Because on the trunk wash, due to the incomplete understanding that she had, and this is why the adult elephant was given a default score of 0 and was failed. Individual task test क्या है? All elephants completed tests for individual tasks before or during their final session. Elephant number 5 faced challenges and did not pass the test for blowing into the bucket, desensitization to the syringe, and steady behavior. Elephant number 4 and 2 struggled with the steady test despite passing their full trunk test. Now यहाँ पे ये वाली बात जो है ना, इंडिविजुअल टास्क टेस्ट क्या है? जहाँ पे हम लोगों ने इंडिविजुअल बिहेवियर्स को सेपरेटली पहले टेस्ट करना है बिफोर द होल बिहेवियर्स कंबाइंड टुगेदर आर टेस्टेड बाय आवर रिसर्चर्स. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे हम लोगों को पता चल जाता है success in individual behavior test depends on the task difficulty, and when introduced during training, the task difficulty was reflected in the number of attempts required. So again हम लोगों ने task की difficulty किस तरीके से nominate करनी है? We say the more number of attempts an elephant is going to take in completing the specific individual task, the broken down task, then that means कि वो सबसे ज़्यादा उसकी difficulty level है. And the task's difficulty was reflected in the task difficulty was reflected in the number of attempts required before achieving or passing a score on the performance task, indicating the practice needed for task reliability. Another result was that some behavioral tasks were more difficult than others. For example, the trunk here task required more offers, cues than the bucket or blow into the bucket task. The elephants gradually improved their performance over time. The mean success rate went from 39 after 10 sessions to 89 after 35 sessions of training. Score never reached 100% as 90% was given as default to individual behaviors within the sequence once the sequence was passed. So again हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल यही बात देखी है कि हमारा जो पासिंग रेशो था वो 10 सेशंस बाद, रिमेंबर हम लोगों ने ये बात की थी कि 10 सेशंस तक किसी भी एलिफेंट को हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया बिकॉज वी वांटेड टू गिव टाइम एंड वी गेव दिस टाइम फॉर एवरी इंडिविजुअल एलिफेंट. सो 10 सेशन तक हम लोग किसी भी एलिफेंट को टेस्ट नहीं किया. 10 सेशन के बाद जब टेस्ट किया तो हमारे पास जो पासिंग रेशियो है दैट वाज 39%, वेयर एज जो हमारे पास आफ्टर 10 सेशन जो है 35 सेशंस तक वो 89% तक पहुंच गया. दैट मीन्स everyone passed. There was one elephant who did not pass and उसका हम लोगों ने उसका डेटा एक्सक्लूड कर दिया है, नहीं लिया साथ में. नाउ यू सी द सेम थिंग ओवर हियर. सही है, अगर आप देखें इस ग्राफ को तो इस ग्राफ के अंदर भी आपके पास वही चीज़ बताई जा रही है. ऑन द राइट हैंड साइड you have the elephants listed down, elephant number 1, 2, 3, 4 and 5. Then after that over there you have your sessions which are written down,
and if I say you need to read this graph, you need to be able to interpret this graph. तो बहुत आसान है. एलिफेंट नंबर 1 ने 30 सेशंस बाद कंप्लीट किया, एलिफेंट नंबर 2 ने 25 सेशंस में कंप्लीट कर लिया, एलिफेंट नंबर 3 ने 35 सेशन में, 4 ने भी 35 सेशन में, और 5 ने फिफ्थ एलिफेंट ने कोई भी सेशन जो है वो कोई भी जो उनकी पूरी बिहेवियर था उसको नहीं कंप्लीट कर सका. सेम गोज ओवर हियर. We have the same information but written down in different ways. We have minutes now, not sessions. Instead of sessions हमारे पास minutes आ गए हैं, and minutes के साथ साथ हमारे पास elephants आ गए हैं. So elephant number 1 ने 373 minutes के अंदर जो है वो complete किया, and so on and so forth. आप इसको पढ़ सकते हैं. Now, what was the goal of this project? Determine if free contact. गोल का मतलब क्या? प्रोजेक्ट का मतलब है रिसर्च का गोल क्या है, राइट? सो इस रिसर्च का गोल मेन ये था टू सी वेदर फ्री कॉन्टैक्ट ट्रेडिशनली ट्रेन्ड एलिफेंट्स कैन बी ट्रेन्ड इन ट्रंक वॉशिंग बिहेवियर with the method known as SPR method. The success rate of 4 out of 5 elephants showed that जो है क्या बोलते हैं हमारे पास इस मेथड की सक्सेस है. We can train elephants. We can train elephants in specific behavior using the SPR method and positive reinforcement, and we don't have to punish or hit the elephants in order to make them learn something. Test improved the क्या बोलते हैं effectiveness after 10-25 sessions. क्योंकि हमारे पास 10 सेशंस तक कोई भी पास नहीं हुआ, 25 सेशन में लोग पास, हमारे पार्टिसिपेंट पास होना शुरू हो गए इस पूरे ट्रंक वॉशिंग बिहेवियर में. एंड अलॉन्ग विद दैट हमने देखा कि 35 सेशन तक एवरीवन ऑलमोस्ट पास्ड. देन एफिशिएंसी ऑफ ट्रेनिंग क्या है? हमारे पास 4 एलिफेंट्स हैं. रिलायबली परफॉर्म ट्रंक वॉश इन 35 सेशंस और फ्यूअर सेशंस. एवरेज सेशंस टाइम जो हम लोगों ने देखा है वो ऑन एन एवरेज every participant took 12 minutes per session. उसके अलावा results suggest that juvenile elephants can learn in less time than the adult. Data insights हम लोगों को क्या बता रहे हैं? The number of offers, जितना attempts उन लोगों को लगेंगे to pass a test that reflects the difficulty, उतना ही वो task difficult है. That means उतनी ही practice ज़रूरी होगी. Provides guidance for teaching similar elephants in the future. So again, after looking at this, we see कि अच्छा हम लोगों ने task की difficulty को देखना होगा, and we need to maybe identify different training times, different training number of training sessions for each difficulty level or each task. इसके बाद आगे चलते हैं. Factors affecting time, training time, prior SPR experience likely speed up learning. So again, now if we see हमारे पास experience आ गया है in training elephants, we know what things to control, we know what to adjust, how to teach them, and what things are necessary in order to teach our elephants. So again, now SPR technique when we apply will be a lot easier for us. Lack of fear in taking treats facilitated trunk here behavior. So again हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों ने कौन से तरह के behaviors के लिए जो naturally occurring behaviors हैं अगर हम उससे related कुछ करवाना चाह रहे हैं, then we know better now due to this research and this study that it will be easier for us to actually basically to actually train these elephants. We know better कि हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा type of training लगाना है. Do we need to lure the elephant into doing something and then give them treats in order for them to learn something, or do we need to capture naturally occurring behavior which basically we want the elephant to do? We know it better now. ठीक है. So आगे चलते हैं. Sight distractions like other animals, tourists and even males influence elephants performance. We know this now because हमारा 5th elephant के अंदर हम लोगों ने एक reason
highlight किया है कि why could the fifth elephant or the adult elephant could not have learned was because there was a lot of interruption by a calf, right? So again we say कि हमारे पास इसके बाद ये information हम highlight कर सकते हैं safely that when there is a lot of interruption, then the elephants may not learn something. Reduced distractions could have shortened training time also. We also know this क्योंकि हम लोगों के पास अगर सिर्फ और सिर्फ focus time होता, then that could have actually made our job a little more easier. We know the challenges that the fifth elephant or the adult elephant faced. Elephant number 5 faced distractions from neighbors, calf during training, impatience and unfocused behavior consisted with a foot abscess. तो उसका एक foot एक पैर के अंदर abscess भी था. And abscess क्या होता है? पस था, पीप था. The elephant was hurt. So again pain की वजह से भी हो सकता है वो focus नहीं कर पा रही हो. Possible vision impairment था उसको and trunk weakness थी. Being an adult in a juvenile group, limited learning modifications. So again it was these were the problems that the elephant number 5th faced. Offer variations: all elephants received 8 to 16 offers in each test except elephant number 1. Elephant number 1, the youngest, had pre-planned 5 offer tests due to impatience and declining performance. So हमारे पास different offers थे जो कि हम लोगों ने इस्तेमाल किए. Different offers का मतलब होता है that we had different opportunities. We gave our elephants different chances to perform the test, 8 to 16 in total. Methodological considerations को अगर हम देखें तो criteria for passing the behavioral test or the task relied on subjectivity of the trainer. So अगर trainer कहता था कि हाँ सही है, this whatever kind of behavior this elephant has showed me is enough for me, तो हम लोग उसको जाने देते थे as pass. But if the trainer was strict, वो कहता कि नहीं ये properly इसने नहीं perform किया है, then that would have made us not pass the test. उसके बाद steady task challenges, sorry not this, unused control task, trunk down, trunk out and targeting tasks were introduced as control methods. Trunk down was not needed and animals time was spent on it. So again ये उन task की बात कर रहे हैं जो याद है हम लोगों ने we read that there were 3 more other tasks that were also part of the behavioral chaining, but we removed them because there was no need of that to be incorporated, because it was not actually teaching our elephants anything in specific. So we removed those tasks and लेकिन उस task में हमारी जो है वो time लगा. So again we incorporated that time also, so that could have actually reduced the learning time of our elephants if we were more prepared. Training efficiency considerations क्या है? Minimal effort spent on unused tasks affected total training time. Again of course जो बात मैं अभी बोल रहा था that जो हम लोगों ने task को exclude कर दिया, हमने उसका भी time लगाया because it was part of the training process. Further studies could explore SPR training in male elephants. हमारे पास यहाँ पे सिर्फ females थी. So again these are we can call these things as improvements. So अगर आपके पास एक सवाल आ सकता है इसके अंदर भी, remember how can Fagan et al study be improved in regards to process. So again ये वाली सारी points जो आपके हैं वो आपके process को improvement के लिए बताए जा रहे हैं. Expanding SPR use for veterinary or general management behaviors in animals is a potential avenue. Including a control group for traditionally trained elephants in future study could highlight
SPR बेनिफिट. सो अगेन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 से 5 जो है वो टोटल एलिफेंट्स थे जिनको हम लोगों ने जिनके ऊपर SPR ट्रेनिंग लगाया और फिर उसको इवैल्यूएट कर लिया कि वो ट्रेनिंग से उन्होंने बिहेवियर लर्न किया कि नहीं. फॉर फर्दर स्टडीज़ दे वुड बेनिफिट फॉर what things can they improve for further studies is that they could actually have gotten 2 groups. One would have gotten SPR training, one would have not gotten the SPR training, and that way they would have identified कि देखो SPR training वाले elephants कितना बेहतर तरीके से sputum या जो mucus collection है वो करवा रहे हैं या trunk washing behavior करवा रहे हैं, whereas it is a challenge for the mahutas and the elephants themselves also to do जिन्होंने traditionally methods से जो कि मारपीट से जो है सीखा है. So again these are the kind of ways you can actually suggest new improvements for the study. Now conclusion की तरफ अगर आते हैं तो conclusion finally हमको क्या कहता है. Fagan et al. Concluded that it is feasible to effectively train juvenile free contact traditionally trained elephants in Nepal to voluntarily and reliably participate in trunk washing using only secondary positive reinforcement techniques. Also, positive reinforcement using shaping and behavioral training can teach elephants to successfully engage in a voluntarily full trunk wash to help test for TB. The researchers concluded from this study that juvenile free contact traditionally trained elephants can be trained to participate in a trunk wash using only SPR training technique. Moreover, this training can be carried out with the voluntary participation of the elephants, avoiding punishments to produce reliable results. So all in all, over here what we want to say is that Fagan et al. She was successful in carrying out her SPR method on elephants. So again, number 1, elephants पे SPR method work करता है, success. Number 2, can we train elephants into trunk washing behavior using SPR method? Tick. Number 3, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक से हमारा एलिफेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखा. टिक. Alright, I hope this has been a beneficial class. So this will be it for Fagan et al. Thank you.